In the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. Well, viewers, in this video I'm going to explain you that what is the basic methodology to solve any type of word problem, whether it is relevant to physics, whether it is relevant to chemistry, whether it is relevant to mathematics, to any subject, whatever the subject is. If you got a word problem, I will tell you in this video that how you have to solve that particular word problem. So first of all, come to first slide, that is steps to solve numerical or steps to solve any word problem. Here you can see that there are 5 steps, or you can say the 5 headings. किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने उसके प्रॉपर रीड आउट करने के बाद ये जो 5 स्टेप्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, आपने इन स्टेप्स की हेडिंग्स बनाकर अपने डाटा को प्रॉपरली अलाइन और फॉर्मुलेट कर लेना है। फर्स्ट स्टेप है गिवन डाटा। आपने अपने वर्ड प्रॉब्लम में से डाटा को निकालना है कि उसमें से जो डाटा न्यूमेरिकल के अंदर या वर्ड प्रॉब्लम में कौन सा डाटा है जो कि गिवन है। सेकेंडली, आपने ये चेक करना है उसकी स्टेटमेंट पढ़ करके आपने फाइंड क्या करना है। थर्डली, जब आपके पास सामने गिवन डाटा और टू व्हाट यू हैव टू फाइंड, दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट व्हाट स्पेसिफिक फार्मूला इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। कौन सा स्पेसिफिक फार्मूला है जो कि इसके अंदर अगर हम लगाएंगे तो वी कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। फोर्थ थिंग है कैलकुलेशंस, कि हमने उस फार्मूला के अंदर कैलकुलेशंस कैसे करनी है। In the end, you will get the result and you will get the final answer of that particular numerical. Let's take one example so that ये सारे के सारे steps आप लोगों को clear हो जाए। Keep this thing in your mind। अगर आप headings बनाकर numerical को solve करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और examiner को भी check करते हुए बहुत आसानी हो जाती है, ताकि और उसके लिए आसानी सेंस में हो जाती है कि उसको marks distribution करने में easiness आप provide करते हो अगर आप इन steps को follow करते हो। So come to the next slide, जिसके अंदर हम अपनी example को discuss करेंगे। So here is the first example, which is one of the word problem. I'm going to read that particular word problem. Find the acceleration that is produced by 20 Newton force in a mass of 8 kg. You can see in this statement data is given and what you have to find acceleration. So here these are some the headings which you have to make. अगर आप इसी तरह हेडिंग्स बनाकर और हेडिंग्स के अकॉर्डिंग डाटा अलाइन करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल करने में भी आसानी होगी और एग्जामिनर को न्यूमेरिकल चेक करने में भी आसानी होगी और मार्क्स देने में भी उसको इजीनेस प्रोवाइड करेंगे आप लोग। सो फर्स्ट हेडिंग अकॉर्डिंग टू द जो प्रीवियस स्टेप्स पढ़े हैं उसमें फर्स्ट हेडिंग हमारी आती है गिवन डाटा। अगर आप न्यूमेरिकल को रीड करते हैं उसमें लिखा हुआ है फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय 20 न्यूटन फोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 न्यूटन फोर्स ये एक स्पेसिफिक एक डाटा गिवन है। उसके बाद इन अ मास ऑफ 8 kg, सो 2 numbers, 2 figures, 2 you can say variables, or you can say 2 quantities are given here. First one is 20 Newton force and the second one is 8 kg mass. So जो डाटा गिवन है हमारे पास वो है force equals to 20 Newton and mass equals to 8 kg. These two things are given, so हम इसको given data की heading में लिख लेंगे। Now हमने find क्या करना है? Here you can see find the acceleration. Start में ही लिखा हुआ है acceleration को आपने find करना है। So what you have to find in the heading to find, you have to write acceleration equals to question mark, means आपने ये acceleration को find करना है। acceleration मैंने bold letters में लिखा क्योंकि acceleration हमारी vector quantity है, you can see। और अगर आप इसको बोल्ड लेटर्स में नहीं लिखते हैं तो आप इसके ऊपर बार भी डाल सकते हैं या एरो हेड का साइन भी डाल सकते हैं इसके सिंबल के ऊपर, सो डैट एग्जामिनर को ये पता चले और आपको भी पता हो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। गिवन डाटा हमारे पास फोर्स इक्वल्स टू 20 न्यूटन, मास इक्वल्स टू 8 kg। फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना। अब इस डाटा को देखते हुए आप लोगों के डिफरेंट फार्मूलाज आपके माइंड में होंगे। आपने इस डाटा को देखते हुए फार्मूलाज को माइंड में रिवाइज करना है कि कौन सा फार्मूला बेस्ट सूटेबल है। So best suitable formula is F equals to ma, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो फिजिक्स के
लर्नर्स हैं, फिजिक्स के टीचर्स या स्टूडेंट्स, उनको पता होगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, F equals to mass into acceleration. So here you can see that according to the given data, force is given here. So we will put the value of force, that is 20 Newton here, and the value of mass, that is 8 kg instead of in the place of mass, and here we have to find acceleration like this. Now in the calculation portion you can see that we have put the 20 Newton equals to 8 kg into acceleration. So what is happening here, basically 8 moves to the left hand side. After calculation you can see that acceleration is 2.5 meter per second square. अब यहाँ तक आपने सारे का सारा गिवन डाटा भी, उसके बाद व्हाट यू हैव टू फाइंड वो भी आपने मेंशन किया, फार्मूला क्या लगेगा वो भी आपने मेंशन किया, उसके बाद आपने कैलकुलेशंस की हेडिंग देने के बाद कैलकुलेशन भी की। इन द एंड आपने रिजल्ट्स को भी मेंशन करना है एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट में। हियर यू कैन सी a statement for the result. Thus acceleration produced by the force is 2.5 meter per second square. So आपने देखा कि एक न्यूमेरिकल एक वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अगर आप इन हेडिंग्स को अपने एग्जामिनेशन में, अपने पेपर प्रेजेंटेशन में यूज करेंगे तो एक एक चीज आप एग्जामिनर के सामने बुलेट्स की फॉर्म में रख रहे हैं। सो इट विल बिकम इजी फॉर द एग्जामिनर टू गिव यू द मार्क्स। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। कीप ऑन शेयरिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so very much for your patience. Allah Hafiz.